Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Lida, your educator, and today we are going to continue final accounts question number 13, balance sheet. We have already done in the previous video, that is the trading account and the profit and loss account. Okay, so it was in your homework to do question number 13, balance sheet, and the tally amount for the balance sheet is 70,000 rupees, right? And this was for your homework. Question number 14, hopefully you have done this. Question number 15, we will try to complete that. If it's not possible for me to complete within the time period, then it's for your homework, right? इसमें देखो purchase, return and outward भी है, right? Purchases के साथ return outward. It means the whole amount is going to be there, okay? नहीं, साथ में ये minus कर देंगे, right? Then carriage for door delivery to customers and import duty. तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है? And question number 16, you can take the screenshot for your homework. 16 and 17, right? So let's start here. Question number 13, right? Question number 13 का मुझे बनाना है हम लोगों को balance sheet, right? So let's start. Question number 13, balance sheet as at Mr. Chatterjee की बना देते हैं हम 31st December or 12 you can also write 2022. Now first I'm going to make the format. इसको आप समझिएगा कि नहीं है कुछ भी, राइट? वो गलती से मुझसे हो गया. ये गलती से हो गया, ठीक है? तो इस कुछ बनाना नहीं है, वो मैं बार बार रब नहीं करूंगी. ओके, ना फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल हमको करना है, नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करना है, एंड उसमें ड्राइंग्स भी थी आपकी. सो गोइंग टू सबट्रैक्ट दैट. कैपिटल वाज 30,000, then draw net profit 26,300. You can take your the screenshot, look at the screenshot of the question, okay, and then you can get the values. So you're getting in the outer column 54,300. Then loan was given. Loan was 8,000. Then bank overdraft. 1,000. Of course, creditors या suppliers जो भी होगा. I'm mentioning both the names. 6,700. Now here, for example, first यहाँ पे आपका दिया है cash 2,000. Then plant and machinery. $35,000. You write it neatly, okay? Then office fixtures. 10,000. Then debtors 8,000. And of course, closing stock. दो जगह पे उसकी एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So it is 15,000. अब दोनों के अमाउंट को आप करिए तो काम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, so you will get
70,000. I hope there will be no problem. Okay, it's so simple to draw. तो आपको आइटम्स भी याद हो गए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. First, make the format trading account. इसका है मिस्टर सी नरिमन. For the year ended as on 31st/12/22. Okay. यहाँ पे मैं लिख लिखी हूँ क्वेश्चन नंबर 14. स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा सही से समझ में आएगा, राइट? Yes. Now I have to make the format. Debit, credit, particulars, amount rupees, amount rupees. First of all, good and bad. Now let's have a look on the question number 14, right? Question number 14 में मिस्टर सी नरीमन का है कैपिटल ड्रॉइंग्स परचेज एंड रिटर्न्स है, ठीक है, रिटर्न्स आउटवर्ड. तो आपका वो गिवन है, राइट? सो रिटर्न्स आप इसमें से माइनस कर देंगे एंड बाकी तो सेल्स में क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, रिटर्न्स नहीं है. तो हम हमारी सेल्स को जो है मेंशन कर देंगे, सेल्स में क्रेडिट सेल्स ऐड कर लेंगे. कैरेज इनवर्ड गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट में कर देंगे, राइट? आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 आउट ऑफ कॉलम में, राइट? सो नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ठीक है. अब मैंने भी बोला था आपसे सेल्स है, मतलब ये कैश सेल्स है और ये वाली क्रेडिट सेल्स है, राइट? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. एंड I told you about the closing stock. That was 30,000. Okay. And sales were given 17,000 plus credit 54,000. No returns, right? So you will get in the outer column 71,000. Now opening stock is given 9,000 in the question. Then two purchases. अब outward है तो इसका मतलब है this is your returns. ये credit पे आपको mention होगा, right? The 25,000 were your purchases and 4,000 आपके outward, it means returns हुए, वो हो गया 21,000. Then wages भी given है आपको and carriage inward मैंने आपको बताया ही था. So you have to mention in the trading account. Wages is 3,000 and this is your 2,000. तो आप टोटल करेंगे तो यहाँ डेबिट का आ जाएगा आपका 35,000 और इसका तो आपको देखने से ही ज्यादा लग रहा है. दैट मीन्स यू हैव द ग्रॉस प्रॉफिट. मैक्सिमम टाइम ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलता है, बट जब एग्जाम में होगा तो आपको ये टोटल करना ही पड़ेगा, राइट? दिस इज योर टोटल. तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा, आप एंड ऐसा वाला नहीं बनाएंगे, आपको ऐसे ही बनाना है, ओके, लिखना है पूरा. सो द डिफरेंस इज 66,000. अब जल्दी से बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट. पॉज द वीडियो, यू हैव द क्वेश्चन एंड देन जस्ट सी कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, राइट? सो लेट्स
Start with the format. अब इतना तो स्टूडेंट्स को आ गया ना कि आराम से वो इतना बना सकते हैं. Now this is your loss account. या डेट थी 31/12/22. This is your credit side. To and buy. And gross profit transferred from trading account 66,000. Now indirect incomes on the credit side and indirect expenses on the debit side. तो अब इसमें क्या mention है? Salaries 10,000. Bad debts. Bad debts is a kind of a loss. 500. Rents, rates, and taxes. 4,000. To discount मीन्स अलाउड होगा. ठीक है, डेबिट क्रेडिट में होता तो हम इसको मेंशन कर देते. यहाँ पे देखो अलाउ डिस्काउंट रिसीव भी आपने किया है, उसका क्रेडिट में है. सिंपल उसको डिस्काउंट रिसीव इधर कर देंगे. इसका आप टोटल कर लेंगे. राइट. सो यू आर गेटिंग हियर 66,500 क्रेडिट का है और डेबिट का कितना टोटल आ रहा है? 16,400. सो बैलेंस इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये आपका आ गया 66,500. 66,500. बैलेंस कितना आ रहा है? 50,100. दोनों का डिफरेंस. राइट. यस. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल अकाउंट. राइट. As at 31/12/22. सबसे पहले ऑलवेज कैपिटल एट नेट प्रॉफिट. ओके, और उसमें ड्राइंग्स भी आपकी गिवन है तो लेस कर देंगे ड्राइंग्स. कैपिटल है 65,000. ऐड करा नेट प्रॉफिट 50,100. So you will be getting 1,15,100. लेस करी ड्राइंग्स हमने, कितनी है? 4,000. आउटर कॉलम में आया 111100. ना बैंक लोन आपका गिवन है. That is 14,000.
Then creditors. It's a statement, right? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या है? वो आपके अकाउंट्स हैं. देन पेटी कैश, कैश एंड बैंक 6,000. Premises go down. All will come under the category of assets. 45,000. Machinery 50,000. Debtors 10,000. And the last important part, closing stock, जो कि आप ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में करते हैं मेंशन. This is 30,000. Total of both the sides, and it must tally. So you will get 1,31,100, 1,31,100. Okay, so this is your question number 14. Full question. You can take the screenshot. Now let's start question number 15. Question number 15. First, make the column. This is the format. Question number 15 of trading account of Mr. P.H. Mehta. Okay, and for the year ended on 31st 12 2018. This is your debit side and this is your credit side. इसमें क्या है आपका रिटर्न्स देखो कितने हैं, परचेजेस एंड रिटर्न आउटवर्ड्स. अगेन इसमें आपका रिटर्न आउटवर्ड्स का परचेजेस रिटर्न हो गया, माइनस कर देंगे परचेजेस में से. फिर आपका ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड्स एंड सेल्स एंड सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट. देन इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस. ओके, ऐसा कुछ खास नहीं, कैरेज फॉर डोर टू डिलीवरी टू कस्टमर्स. तो ये आपका जो आ जाएगा डोर डिलीवरी कैरेज है, इट मीन्स आउटवर्ड. ओके, तो आप इसको मेंशन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. तो ओपनिंग स्टॉक अभी मैंने बताया था, परचेजेस लेस रिटर्न्स. परचेजेस कितना है, 118800, and returns is I think 500 returns है, right. टोटल आउटर कॉलम में आएगा 118300, 6200 आपका ये है. बाय सेल्स लेस रिटर्न्स. सो सेल्स कितनी है आपकी, by the time you can write here this one, closing stock. Okay, let me just see the sales and return inwards. टोटल अमाउंट दे दिया इन्होंने, ठीक है.
तो हम बाहर ही लिख देंगे 3,48,500। लेस रिटर्न्स नहीं लिखेंगे हम लिख देंगे बाय सेल्स एंड रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, देन बाय क्लोजिंग स्टॉक मेंशन हियर 48,700। ओके, देन इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता है। ठीक है, 2,200। देन टू वेजेस 27,700। अब इनका टोटल कर लेंगे तो 15,40,00 एंड इसका टोटल जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3,97,200। 3,97,200, that means it's a gross profit। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमेशा पीएल में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देखो ये वाला नहीं बनाना, पूरा मेंशन करना। सो दैट वुड बी 242,800। नाउ वेरी क्विकली मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट transferred from trading account and the amount was 242,800. 2,42,800. Now salaries 21,650. इसमें ज्यादा आइटम्स होते हैं क्या? Rates and taxes 950. To insurance 250. To agency commission 900 उन्होंने पे किया होगा। To advertising 5,000, it's again an expense। To bad debts 800। To postage and telegrams 800। To carriage for door delivery, यानी कि carriage outward है ये। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं कम लिख रही हूँ। राइट नाउ यहाँ पे डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, क्रेडिट साइड पे 150 डिस्काउंट रिसीव होगा। नाउ व्हेन यू गोइंग टू टोटल हियर तो आपका इसका आ जाएगा 242,950। 242,950 इज द क्रेडिट अमाउंट और डेबिट में कितना आ रहा है आपका 34450। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट का कम है क्रेडिट का ज्यादा है, सो आई एम गेटिंग द नेट प्रॉफिट। नाउ स्पेस इज लेस इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके,
में आपको पूरा लिखना है. The space is less, that's why. 242,950, 242,950, and the difference is 28,500. 28 is 2 lakh 8,500. So that would be your net profit, right? So net profit अब आपको आ गया. Now you have to again make a balance sheet. Okay, उसमें capital आपको दिखाएंगे, net profit add करेंगे, less करेंगे drawings, and then of course जो भी आपके asset side हैं वो सब आप उसको करेंगे, right? Cash है, debtors है, plant and machinery, land and building, furnitures and fittings, and petty cash balance, and of course closing stock, right? Creditors and net आपका capital आ जाएगा. Okay, so that would be around आपका बैलेंस शीट जो टैली करेगी क्वेश्चन नंबर 15 की, इसका अमाउंट होगा 416,500. Only closing stock is the adjustment. And question number 16, I have already shared you the screenshot. That would be for your homework. So please stay tuned. In the next video, we are going to solve some more few questions. Thank you for watching.